Hello dear students, welcome to all at Meenakshi eTutor. Today we will start our topic with gender inequality in India. Dear students, we are proud to be 21st century Indians who celebrate happiness when a son is born. Or in opposite, a daughter is born, they are peaceful even then the rule of celebrating no one is made. Dear students, we can saw in the society so much love for the boys, that is the desire of the birth of boys. We have been killing girls since ancient time before birth or before death. We can find many ways to discriminate while we live in 21st century. Dear students, first of all, we want to discuss about gender equality, equal participation of women and men in decision making. Or in a simple manner, gender equality is the process of being fair, is the absence of discrimination on the male or female. प्यारे बच्चों, लेकिन ये असमानता हमारे प्राचीन भारत का ही एक हिस्सा रही है। अगर हम उदाहरण देखें अपने प्राचीन भारत का, तो प्राचीन भारतीय हिंदू कानून के निर्माता मनु, उन्होंने कहा कि औरत को अपने बाल्यकाल में अपने पिता के अधीन रहना चाहिए, शादी के बाद पति के अधीन रहना चाहिए और वृद्धावस्था में अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। अर्थात किसी भी परिस्थिति में उसे खुद को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं थी। भले ही हम कितने आगे बढ़ चुके हों, लेकिन परिस्थितियां बदली नहीं हैं। लड़की को बचपन से शिक्षित करना आज भी एक बुरा निवेश माना जाता है, क्योंकि उसकी शादी होगी, उसे पिता को छोड़ के दूसरे घर जाना पड़ेगा, इसीलिए उसकी शिक्षा पर खर्च करना व्यर्थ माना जाता है। और यही सारी चीजें समाज में असमानता पैदा करती हैं। Dear students, the root cause of gender inequality in Indian society lies in the patriarchy system. Patriarchy system means when men play a super role in the society. You can see in the image, there are many causes in gender inequality. Lack of education, our social structure, our social system, or our traditional values, poverty, unemployment. These are the basic factor of gender inequality. Dear student, at last we can say men and women are the basic foundation of the society. Dear students, if we want to bring men and women to a equal level, then we should talk about equality instead of inequality. Thank you.